Hello guys, welcome back to the second lecture in the series for finance for non-finance professionals, where we will be looking in understanding of balance sheet and income statement. Now, before actually moving to understanding of balance sheet and income statement, I'm going to spend just 5 minutes on what we have understood in our last lecture. Okay, now in our last lecture, we saw few concepts which are ground rules of accounting on which the complete accounting is based. The first rule says the separate entity concept, saying that the owner and the business are two different separate entities and they are not the same. Second concept is going concern concept, which says that business will never die, it will keep on running. Third one is money measurement concept. Everything in accounting should be measured in terms of money itself. Accrual concept, which says that if the contract is done, no matter whether you receive money or you deliver the goods, still you have to write it as a sale. We will see it in our future lectures. The dual aspect concept, every transaction will have at least two effects. That is called dual aspect. Materialistic concept, all small things should be clubbed together in order to make it a big thing, like stationery. We have seen a piece of paper will together combined with all other stationery will be a part of the big stationery. So you need not have to write, I have two pen as a set, one ream of pages as a set. No. Historical cost concept. This says that the cost at which asset is purchased should be written on that cost itself on the balance sheet. Another concept which one is left, which is called zero entity concept, which says that the total value of company on any particular day is zero. So nothing belongs to a company. Now, we have seen some financial jargons. Assets, anything which belongs to company is called asset. Liability, anything which company have to pay to others is a liability. Capital is money given by the owner to the business is a capital. Capital is a liability. Why? Because owner and the business are separate. So money given by the owner to the business will have to give it back to the owner. From now on, we will always look from company's point of view. Loan, money given by a bank to the company. So company will have to pay it back. Therefore, loan is also a liability. Debtors, debtors always come when we sell finished goods on credit. अगर finished goods उधारी पे बेचे तो debtors आते हैं. So what are debtors? जिनको हमने finished goods बेचे और उनसे पैसे लेना बाकी है. Those are our debtors. Creditors, जिनसे हमने रॉ मटेरियल उधारी पे लिया और जिन्हें हम पैसे देना बाकी. So debtors will be my asset, creditors will be my liability, क्योंकि creditors को मुझे पैसा देना है, debtors से मुझे पैसे लेना है. Operating expenses, expenses which are related to operations of the business are called operating. Profit, profit is a liability because profit does not belong to the company, but it belongs to the shareholders of the company or owners of the company. The owners are also called as shareholders. ये हमने कल देख लिया. Let's move ahead. Today, I'm going to speak about the format of income statement, which is also called as profit and loss statement. Now, I'm going to take you on Excel sheet. Yeah. Okay. So this is the format of income statement. Now, always remember, income statement is for a particular period and not for particular day. Balance sheet is for one particular day and it's not for a period.
That's the difference between income statement and balance sheet. Now, इनकम स्टेटमेंट में हम एक साल में जो भी इनकम हुआ और जो भी खर्चा हुआ वो सारा कुछ लिखते हैं। एक साल में जो भी खर्चा हुआ और जो भी इनकम हुआ वो सारा कुछ हम इनकम स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देयर आर some complicated one also. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे we will try to see if that helps us out. Okay. इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स, सेल्स को भी हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। इसको हम फ्रंट लाइन बोलते हैं बिजनेस के लैंग्वेज में, फ्रंट लाइन एंड बॉटम लाइन। नाउ उसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्ट्रैक्ट करें, मतलब गुड्स बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फिनिश, वो हम माइनस करेंगे। सो लेट अस से 1000 रुपीज इन अ पर्टिकुलर ईयर मैंने सेल किया। नाउ उसमें से 400 रुपीज वो गुड्स बनाने के लिए, उसमें क्या आएगा? बेसिकली इसमें आता है रॉ मटेरियल प्लस वेजेस plus electricity and all that factory expenses which are directly related to production. Now सैलरी और वेजेस का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे हम। जो एक्चुअल गुड्स बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं, और जो इनडायरेक्टली काम करते हैं उन्हें सैलरी। So anyone who is directly related to production gets wages, and anyone who is not directly related to production gets salary. Now, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दिए तो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट सेलिंग, एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस, advertisement, transportation, discounts and all that, let's say that becomes 150. So ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सेलिंग और ये निकाल दिए तो हमें मिलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Now we have not discussed depreciation as yet, depreciation and amortization. In next lecture I will try to do that. For now, depreciation is reduction in value of asset due to wear and tear. Asset की वैल्यू कम होना ड्यू टू वियर एंड टियर, इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन ये डेप्रिसिएशन जैसे ही रहता है बट नॉन टेंजिबल असेट्स के, जैसे जो असेट्स हमें दिखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आई पेड लाइसेंस फी फॉर 5 years टू यूज अ सॉफ्टवेयर। सो एक साल खत्म हो गया, 5 साल के लिए मैंने 1000 दिए, तो एक साल के लिए 200. So that 200 is amortization. That is amortization is depreciation of non-tangible asset. Non-tangible मतलब जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, we call it as non-tangible. So this is non-cash expenditure. हम ये पैसा किसी को देते नहीं है, but इससे हमारा टैक्स कम होता है. We are going to see in detail. Yes. So ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम इबिटा भी बोलते हैं, इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें से अगर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर दे हम तो हमें मिलता है इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हमारे कंपनी के पास लोन हो तो उसका अगर इंटरेस्ट है तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इबिट में से जब इंटरेस्ट निकलता है तब हम
उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। उसी को बहुत सारे लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, पीबीटी। नाउ assume tax rate is 30%. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% अगर टैक्स लिया जाए तो जो बचता है दैट इज माय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इसी को हम बॉटम लाइन भी कहते हैं इन बिजनेस टर्म। सो दिस इज बेसिकली एन इनकम स्टेटमेंट। आपको कुछ चीजें याद में रखना है, क्या क्या है मैं बताता हूँ। इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड के लिए होता है। यहाँ पे हमने फॉर ईयर एंडिंग लिखा है, मतलब पूरे साल के लिए था, 1 जनवरी 2022 से तो 31 दिसंबर 2022। नाउ अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट स्टार्ट्स विथ 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2020। सो बेसिकली एक साल के लिए, क्वार्टरली भी रह सकता है, 6 मंथली भी रह सकता है, बट हम अभी ईयरली। इसमें हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन देखा नहीं, आई थिंक बाकी की चीजें आपको पता है क्या है ना। लेट अस गो ऑन बैलेंस शीट। नाउ दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये लायबिलिटीज और असेट मैंने बाजू बाजू में लिया है। कुछ बैलेंस शीट्स में एक के नीचे एक भी रहता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। हम सीखने के लिए ऐसे फॉर्मेट में देखते हैं, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये लायबिलिटीज को असेट के नीचे डाल दो या असेट को लायबिलिटीज के नीचे डाल दो। जनरली लायबिलिटीज असेट के नीचे। नाउ असेट मतलब यू नो एनीथिंग विच बिलोंग्स टू मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपके पास फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का कुछ स्टॉक है तो। कैश, दीज आर मेजर आइटम्स। सिर्फ यही रहते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मेजर आइटम है, ये मेजर आइटम देख। लायबिलिटीज में कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो चीज होती है जो प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर्स को अभी दिया नहीं है, खुद के पास रखा है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। लोन, जो कंपनी ने लोन किया है। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने रॉ मटेरियल उधारी पे लिया है उन्हीं को हम क्रेडिटर्स बोले। क्रेडिटर्स आर दोज पीपल जिनसे हमने रॉ मटेरियल उधारी पे, रॉ मटेरियल छोड़ के बाकी कुछ उधारी पे लिया है, या सैलरी पेएबल है, या फर्नीचर ले लिया उधारी पे, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पे। तो क्रेडिटर्स सिर्फ उन्हीं को बोलेंगे जिनके पास से हमने रॉ मटेरियल उधारी। नाउ दिस इज बैलेंस शीट। ऑलवेज रिमेंबर द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज should be equal to total amount of your assets. फिर से बोलता हूं, please understand the total amount of your liabilities should be equal to total amount of your assets. Now we are going to play with balance sheet. Now हमने एक रूल देखा था अकाउंटिंग, which says dual aspect, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट। नाउ लेट्स सी, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। नाउ फॉरगेट इनकम स्टेटमेंट, हम सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं। ओके, नाउ ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिए है एंड वी आर गोइंग टू प्ले बाय इट। ओके,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम कर देते हैं, तो सारे वैल्यूज का सम आना चाहिए इधर। परफेक्ट। हेल्प मी गाइस, लेट्स डू दिस। आई एम क्वाइट श्योर एक बार ये आपने कर लिया, यू विल नेवर फॉरगेट बैलेंस शीट इन योर लाइफ एंड यू विल ऑलवेज थैंक मी, दैट्स फॉर श्योर। ओके, remember reserves and surplus means profit which is not shared with the owners. Okay. Started business with 1000 rupees capital. बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितना आया, 1000 रुपीज। जब कैपिटल आया मतलब कंपनी के पास कैश भी आया, देयरफॉर हमारे बैलेंस शीट मैच। टू एंट्रीज, रिमेंबर मिनिमम टू एंट्रीज, डुअल एंटिटी कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट अभी ध्यान में नहीं आया, गो बैक, सी, पॉज द वीडियो एंड चेक डुअल एंटिटी कंसेप्ट। Every transaction will have at least two impact. So capital आया, अब ये कैपिटल वापस देना है किसको, ओनर को, देयरफॉर ये लायबिलिटी हो गई। और कैश, कैश आ गई, कैश हमारी है, खुद की है, तो कैश इज एन असेट। नाउ पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, गुड। लेट्स डू सेकंड ट्रांजैक्शन। परचेस्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 100, 400 सॉरी। अब गाइस हेल्प मी, इफ आई परचेस अ मशीनरी ऑफ 400, मशीनरी खरीदने के लिए क्या देना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्टली कैश देना पड़ेगा। तो जो कैश 1000 था वो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 400, कैश विल बी 600। मैच हो रही है बैलेंस शीट अगेन, फिर से देखो, कैश वॉज 1000 प्रीवियसली, अब हमने क्या किया, 400 रुपीज की मशीनरी, तो मशीनरी खरीद ली 400 रुपीज की, तो कैश रह गया 600। क्यों, क्योंकि 400 रुपीज मशीनरी खरीदने के लिए कैश देना पड़ा। अभी क्लियर विद दिस, आई होप सो। ओके, दिस इज डन। ओके, नाउ हेल्प मी विद दिस। परचेस रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज 400। यस, रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। 400 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, उधारी पे खरीदा है, क्या कुछ लिखा नहीं है, मतलब कैश में खरीदा है। सो 600 रुपए में से 400 रुपए रॉ मटेरियल को गए, बचा कितना, 200। दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, बैलेंस शीट मैच हो रही है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक। टेकन लोन ऑफ रुपीज 500। help me, I am quite sure you know it now. I have taken loan of 500 rupees. तो 500 रुपए कैश में बढ़ेंगे, मेरे पास 200 थे, 200 प्लस 500 विल नाउ बिकम 700। बैलेंस शीट मैच हो रही है, परफेक्ट। सो लोन ले लिया तो कैश भी 500 से बढ़ गई, डुअल एंटिटी। नाउ उसमें एक वर्ड है एटलीस्ट टू इम्पैक्ट डुअल एंटिटी कंसेप्ट में। सो वो देखते हैं डुअल एस्पेक्ट में। ये देखो, सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 400 फॉर 6। सबसे पहले मैं बाहर करता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 400 रुपए की जो इन्वेंट्री थी वो मैंने 600 में बेची, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, यस। तो इन्वेंटरी 400,
प्रॉफिट कितने का? 200 रुपए का। नाउ देखो अच्छी तरह से हाउ आई एम डूइंग। आगे क्या है? 300 कैश में मिले, 300 क्रेडिट में। अब फिनिश गुड्स जब मैं सोल्ड करता हूं ऑन क्रेडिट तो मुझे डेटर्स आता है। अब सवाल क्या है? पैसे कितने आ रहे हैं? 600। 400 रुपीज जा रहे हैं, 200 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या है? इन्वेंटरी 400 की गई, प्रॉफिट 200 का, 600 रुपए। आउट ऑफ विच 600 रुपए में से 300 रुपए आ रहे हैं मुझे, 300 आई एम गेटिंग इन कैश and 300 will come in डेटर्स। 300 रुपए कैश आ गए, 300 रुपए डेटर्स। तो देखो इन्वेंट्री चलेगी 400 रुपए से, दिस इसका काम हो गया। प्रॉफिट हो गया 200 रुपए। प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? यस, लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में 200 रुपए आ गए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, इट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द कंपनी एंड नॉट द कंपनी। कैश कितनी आ गई? 300 रुपए। सो कैश वॉज 700, increase it to 1000. This has been taken care of. Now the last one is debtors. How much will be the debtors? Debtors will be of 300. Voila. My balance sheet again match. So always remember, it's not that there should be only two entries. There can be multiple entries. So that's how you can do it. It's not compulsory कि आपको अभी के अभी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो just put it in comment. I will make another small video only for yourself so that you can understand it in better way. So this transaction has been done. Now, last two entries and then we will stop for the day. Okay. Purchase raw material again on credit rupees 300. तो raw material मतलब inventory 300 की inventory खरीदी, but cash में खरीदी क्या? Will cash go out? No. You have purchased it on credit, so it will be creditors. Creditors कौन होता है? जिससे हम raw material उधारी पे लेते हैं। तो purchase raw material again on credit rupees 300 we have taken care of. Now the last transaction. Purchased furniture on credit rupees 200. फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा फर्नीचर आ रहा है तो 200 रुपीज का फर्नीचर। कैश में लिया क्या? नहीं, क्रेडिट में लिया, तो दैट बिकम्स बिल्स पेएबल। तो मुझे 200 रुपए के बिल्स एंड बोला माय बैलेंस शीट अगेन मैच। नाउ if you keep this idea into mind about how balance sheet works, I'm quite sure no one can stop you. Now, please do this couple of times, read, understand what's going on here. If you have any doubt, you can always ask me in comments. I will be more than happy to answer your questions. I think we should stop here for the day.